Hello everyone. So in this video we are going to see Index 21. It's a very quick revision. So I request you all to not to see any other video and watch this video till the end. पूरा concept बता देता हूँ मैं and ये video के बाद ना you will be able to do any kind of sum. I can guarantee that. So let's get started. So first and foremost, definitions. What is foreign currency? Foreign currency is nothing but other than functional currency. Now what is functional currency? Functional currency is an economic environment in which the entity is operating. So you will have to see what is its economic environment, and there are certain parameters to determine what is your functional currency. Okay, we will see that. Presentational currency is, suppose if your functional currency is rupees and you want to present it in dollars, whatever may be the reason, and you're preparing your financial statements in dollars, then that is your presentational currency. Okay, now there are certain points to determine. For every entity you will have to apply this primary and secondary conditions to see what is its functional currency. Okay, to simplify, definitely this could be a 4 marks question, theory question. First वाला बात करता है सेल प्राइस के बारे में, primary condition, and the other one is cost. So primary conditions are of two types. One talks about sales and the other one talks about cost. Okay, now secondary conditions, it talks about from where you're generating your funds, from which currency you're getting your funds, and then the fourth point is whatever receipts you got from operating activities, where are you retaining it, in which currency you are retaining. So these two are secondary activities and these are primary activities. Like let's see about sale price. Okay, you will determine your sale price based on your competitors. Like you will see what is the rate of the competitors ka product, and based on that you will determine your sale price. So that competitive forces, which competitors forces are affecting your sale price, which currency is mainly influencing your sale price, right? You're understanding. And cost also same, which currency is mainly influencing your cost, material ho, labor ho, other cost ho. Okay, so these two are primary conditions, easy to remember, and secondary conditions. Okay, now sometimes there is a foreign entity, उसका branch इंडिया में, ठीक है. Now foreign entity का suppose it is in US, उसका functional currency डॉलर्स होगा, and another entity उसका branch इंडिया में, उसका functional currency रुपीस होगा ideally. So sometimes what the standard says is the branch which is in India, उसका currency भी डॉलर्स हो सकता है, ठीक है. So if it satisfies these four conditions, no, जो रिपोर्टिंग एंटिटी का फंक्शनल करेंसी है वो भी उसका ब्रांच का भी फंक्शनल करेंसी होगा, इवन दो इट इज सिचुएटेड इन इंडिया. लेट्स सी. सो फर्स्ट वाला टॉक्स इज इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है. यूएस वाला है, यहाँ पे एक ब्रांच खोला, तो व्हाट इज दिस ब्रांच डूइंग? इट इज़ इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम यूएस एंटिटी एंड इट इज़ सेलिंग दोज गुड्स हियर, and then whatever amount that it is culling, it is transferring back to its US entity. So it is just an extension. यहाँ पे कुछ बिजनेस नहीं कर रहा है वो, बस इंपोर्ट कर रहा है, सेल कर रहा है, पैसे जमा करके फिर से बेच दे रहा है यूएस को. सो इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन इन दैट केस. एंड देन ट्रांजैक्शंस विद रिपोर्टिंग एंटिटी आर वेरी हाई. रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ बहुत हाई ट्रांजैक्शन है उसके. एंड देन कैश फ्लोज ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस आर डायरेक्टली अफेक्टिंग द कैश फ्लोज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी. सपोज यू कैन टेक लोन्स, यहाँ पे लोन रिपेमेंट करे तो उनको रिसीवेबल होता यूएस एंटिटी को, इनको पेमेंट होता, तो कैश फ्लोज आर डायरेक्टली अफेक्टिंग ईच अदर्स एंटिटी. सो अगर वो ट्रांजैक्शंस हाई है, इवन इन दैट केस ऑल्सो यू शुड सी कि इसका फंक्शनल करेंसी उसका फंक्शनल करेंसी सेम है. एंड देन द लास्ट पॉइंट इज इट इज़ नॉट एबल टू पे इट्स ओन डेट. उसका डेट पेमेंट करने को फिर से रिपोर्टिंग एंटिटी से वो पैसे ले रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो रिपोर्टिंग एंटिटी का फंक्शनल करेंसी विल बी इट्स फंक्शनल करेंसी ऑल्सो. आई होप यू अंडरस्टूड दिस 4 पॉइंट्स. इट्स ईजी. MCQs में आने के चांसेस बहुत रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, सो प्लीज़ टू मेक ए नोट ऑफ इट. नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. सो यहाँ तक तो थियरी हो गया, अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है. सो व्हेन डू यू रिकॉग्नाइज इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? फर्स्ट वन इज़ ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. जब भी आप ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो, ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन इज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. वेन एवर यू एंटर इन टू अ ट्रांजैक्शन ऑन दैट डेट, अगर समझो, सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो कोई और एंटिटी विच इज़ आउटसाइड ऑफ द इंडिया, ठीक है, whatever the transaction could be, you're buying goods, selling goods, or you're buying a property, plant and equipment, taking loan, whatever the transaction is, okay, only one transaction, so in that case, on the date of transaction, when you're purchasing a property, plant and equipment, on that date you will see what is its exchange rate and you will recognize in your books of accounts. That is done. Now subsequent recognition कब करोगे? Subsequent recognition, it says it is bifurcated into two, monetary and non-monetary items. Now let us understand what is monetary item. Monetary item में ना fixed amount is determined.
whether you'll have to pay cash or you'll have to receive cash to settle it. Cash is involved in it. कैश आता है या कैश कैश का इनफ्लो होता या कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है, टू सेटल दैट ट्रांजैक्शन. सो कैश इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन इट, देन वी से इट इज़ अ मॉनिटरी आइटम. ओके, तो फॉर ऑल द मॉनिटरी आइटम्स इट इज़ क्लोजिंग रेट. ओके, एंड फॉर नॉन मॉनिटरी आइटम ना, इट इज़ बाइफिकेटेड इनटू अगेन टू टाइप्स. नॉन मॉनिटरी आइटम में बेसिकली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, योर इन्वेंट्रीज वेयर देर इज नो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश इज there, cash is involved. All those will be non-monetary items. ठीक है. Now suppose let's take an example of property, plant and equipment only. PPE का एग्जाम्पल ले लेंगे अपन. तो इन इंडिया 16 यू ऑल हैव रेड कि वहाँ पे एक रिवैल्यूएशन मॉडल का कॉन्सेप्ट है. यू कैन अप्लाई रिवैल्यूएशन मॉडल. ठीक है. अगर वैसा रिवैल्यूएशन मॉडल कुछ अप्लाई कर रहे हैं देन व्हाट. अगर नहीं हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे इस रिकॉर्ड कर रहे हैं देन व्हाट. इफ़ इट इज़ ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस इट सेज कि नो इट इज़ नॉट कन्वर्टेड, नहीं कन्वर्टेड. अगर फेयर वैल्यू, सपोज फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, वट एवर दैट रिवैल्यूएशन अमाउंट इज कमिंग, देन अगेन सो एक्सचेंज रेट कौन सा लेते हैं. तो ऑन द डेट अगर समझो कि आप 31 मार्च को, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस इन योर आई सी आई मटेरियल में, तो 31 मार्च को आप फेयर वैल्यू डिटरमाइन करें. ओके, समवेयर इन सितंबर यू परचेज दिस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उस दिन आप लोग रिकॉर्ड कर दिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. बट सिंस इट्स रिकॉर्डेड ऑन रिवैल्यूएशन मॉडल बेसिस, यू विल ऑल्सो सी इट्स रिवैल्यूएशन what is its fair value on 31st March. ठीक है. On this date you will see its fair value. So since you are verifying its fair value, on that date का exchange rate भी देखना पड़ता आपको. ठीक है. On that date what is its exchange rate? What is its exchange rate on 31st March? I hope you understood, and based on that you will recognize. अभी देखो, one more point that you need to it should strike you guys is, ठीक है, इनिशियली एक अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड देन लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिसीवेबल्स ओनली. ठीक है. सितंबर में आप लोग सेल करे हैं. ठीक है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द रेट वॉज 30 रुपीज़. सितंबर एक्सचेंज रेट वॉज 30. ठीक है. दिस इज़ रिसीवेबल आई एम टॉकिंग अबाउट. बट देन ऑन 31st March इट इज़ अ मॉनिटरी आइटम. रिसीवेबल इज़ अ मॉनिटरी आइटम. तो ऑन 31st March इट बिकेम 33. मतलब क्या, एक्सचेंज रेट बढ़ गया. सो यू विल बी गेटिंग मोर अमाउंट. लाइक सपोज $1,000 आप सेल करें समझो. इफ़ यू हैव सोल्ड सम $1,000, वेट ए सेकेंड. ओके, सो $1,000 you have sold the products worth $1,000. Okay, so ideally in the month of September you were supposed to receive 30,000. Okay, now what happened, the exchange rate has increased. Now we are going to receive 33,000. Okay, so this is on credit basis, right? So there is an increase of 3,000 rupees. So this increase will go and sit directly in P&L account. Okay, so here really you are going to receive some kind of money. You have entered into a sale transaction here. So if the amount is increasing, if the exchange price is increasing, definitely you will end up getting more. So that is directly it will go and sit in your P&L account, right? So for all monetary transactions, no, whatever the exchange rate gain or loss is there, that will go and sit in your P&L account, right? Now let us understand for fair value. Anyways, historical cost, नॉन मॉनिटरी आइटम, हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो वी आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इट. तो वहाँ पे एक्सचेंज गेन और लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं आता है. सी यहाँ पे ना एक्सचेंज गेन और लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं आता बिकॉज यू आर रिकॉग्नाइजिंग इट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली. बस एट द टाइम ऑफ परचेज यू आर रिकॉर्डिंग एज पर द एक्सचेंज रेट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. उसके बाद डिप्रिशिएट करते चले जा रहे हो. ठीक है. उसमें ना एक्सचेंज गेन और लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं आता. बट इफ़ इट इज़ फेयर वैल्यू, वी आर चेकिंग द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट व्हेन वी आर वेरीफाइंग इट्स फेयर वैल्यू, राइट? तो वहाँ पे गेन और लॉस का आने का चांसेस है. तो व्हाट यू विल डू, सो यहाँ पे स्टैंडर्ड बोलता है, लाइक देयर इज़ एन एग्जांपल हियर, राइट? ठीक है. देयर इज़ दैट रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट. नो, व्हाट यू आर डूइंग, सपोज PPE 1 लाख का है एंड रिवैल्यूएशन ऑन 31st March 20,000 बढ़ गया उसका. तो व्हाट यू आर डूइंग, 20,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल रहे ना, राइट? 20,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल रहे. तो ऑन दैट पर्टिकुलर डेट यू आर ऑल्सो चेकिंग योर एक्सचेंज रेट. अगर एक्सचेंज रेट भी बढ़ गया ना, तो वो OCI में FCTR बोल के एक रहता, यहाँ पे आ जाता वो रिवैल्यूएशन का. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. सपोज सेम ये 20,000 जो बढ़ गया इधर, आप लोग P&L में डाल रहे हो. तो यहाँ पे जो एक्सचेंज गेन और लॉस आता है ना 31st March को, दैट विल गो एंड फॉल इन P&L ओनली.
I hope this is clear for you guys. So I was talking about this one, राइट, फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट का. फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट अगर रिवैल्यूएशन मॉडल का कॉन्सेप्ट है तो देन दैट विल गो एंड सिट इन योर OCI. नहीं, अगर फेयर वैल्यू अगर बढ़ गया तो दैट इज यू आर क्रेडिटिंग इट टू P&L अकाउंट. देन एक्सचेंज गेन और लॉस ऑल्सो विल गो एंड सिट इन योर P&L अकाउंट. देखो मॉनिटरी में, लेट्स मूव ऑन. मॉनिटरी में कैश इज इन्वॉल्व, ओके, एंड नॉन मॉनिटरी में कैश इज नॉट इन्वॉल्व. क्लियर नो. एंड रिकग्निशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस, दिस वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ. मॉनिटरी आइटम के लिए recognition will happen in P&L account only. Monetary items को receivables, payables, cash का, these are monetary items. So if foreign exchange gain or loss, no, that will go and sit in your P&L only. And then non-monetary items, this is like property, plant and equipment, inventories and all that stuff. So अगर revaluation basis पे है then that will go and sit in your OCI. नहीं, अगर P&L में डाल रहे, whatever revaluation amount is there that is going into P&L, then exchange difference also will go and sit in your P&L. Clear, not till here? So till here what we have studied is only single transaction. okay, अपना एंटिटी इंडिया में, दूसरा एंटिटी कहीं और है आउटसाइड ऑफ द कंट्री. तो आउटसाइड ऑफ द कंट्री वालों को अपन खरीदा या अपन बेचा या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा या लोन, any one single transaction that we have done, then we are recording it as per this. okay, so we will see it's a monetary item or non-monetary item and then we will record. ठीक है. नाउ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन मतलब क्या. सपोज आई हैव 20% इंटरेस्ट इन फॉरेन एंटिटी. यहाँ पे एक एंटिटी है एंड आई हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड 20% देयर इन फॉरेन एंटिटी. तो दैट 20% इज़ द नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन फॉर मी. ठीक है. तो व्हेन यू आर डूइंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लाइक यहाँ पे आई विल प्रिपेयर माई ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट. वहाँ पे दूसरा एंटिटी दे विल प्रिपेयर देयर ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट. Now when we are doing any kind of transactions, first of all you need to understand what all things will come in net investment. okay, long term receivables and loans will come under net investment. Trade receivables and trade payables will not come. okay, remember that. And any exchange difference in separate financial statements will sit in, अभी individual financial statements में, separate financial statements में exchange difference will go and sit in P&L only. But when you're consolidating both, since you know that becomes my associate, since I'm holding 20% shares, that will become my associate now. When we are doing consolidated financial statements, that exchange difference will go and sit in OCI. ठीक है. यहाँ पे कुछ बाइंग और सेलिंग नहीं हो रहा है. ठीक है. when you're clubbing those two financial statements, no, then you will record it based on certain rates as on that date. तो उसके वजह से ट्रांसलेशन डिफरेंस आता है. तो दैट इज़ नॉट योर permanent profit or permanent loss. okay, it is temporary. So whatever that temporary thing is there, it will go and sit in other comprehensive income. okay, and then reclassified to equity. तो तब मैं वो 20% सेल करता ना, तब वो OCI में अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू योर P&L अकाउंट. क्लियर नो. वी विल सी दिस डिस्पोजेबल बोल के कॉन्सेप्ट है. वी विल बी डूइंग दैट नाउ ओनली. देयर आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड क्लियरली. बट फॉर नाउ यू रिमेंबर दैट कि अगर कोई कुछ इन्वेस्टमेंट है अपना बाहर एंटिटी में, and then whatever exchange gain or loss will sit in OCI. Once I sell off that investment, then it will come to P&L account. Functional currency. See, we have seen these parameters, no, primary, secondary. So where is that? See, this primary and secondary conditions that we have seen. अगर ये parameters change हो गए ना, कि अगर उसको कोई और करेंसी इन्फ्लुएंस कर रहा सेल प्राइस को, कोई और करेंसी इन्फ्लुएंस कर रहा कॉस्ट को, देन योर फंक्शनल करेंसी ऑल्सो विल चेंज. आई होप दिस इज़ क्लियर. तो वही बोल रहा है ये फंक्शनल करेंसी. सो फंक्शनल करेंसी वट एवर चेंज हैपन्स, नो दैट यू विल हैव टू सी इट एस अकाउंटिंग एस्टिमेट. मतलब प्रोस्पेक्टिवली उसके चेंजेस को अकाउंट करना पड़ता है. इट्स एन अकाउंटिंग एस्टिमेट. ओके. एंड देन प्रेजेंटेशनल करेंसी. इफ़ देर इज़ अ चेंज इन प्रेजेंटेशनल करेंसी, मतलब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन डॉलर्स, व्हेन योर फंक्शनल करेंसी इज़ रुपीज़. ठीक है. एंड नाउ यू आर चेंजिंग इट इनटू सम अदर डॉलर, यूरोस. ठीक है. दैट इज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रेट्रोस्पेक्टिवली उसका इफेक्ट देना पड़ता है. अभी प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो यू हैव टू चेंज. ओके. सो दिस इज ट्रांसलेशन. सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस जस्ट नाउ, नेट इन्वेस्टमेंट का. ठीक है. मेरा 20% इन्वेस्टमेंट है, 30% इन्वेस्टमेंट है. सो CFS में ऑल योर एसोसिएट, जॉइंट एग्रीमेंट्स, सब्सिडरीज, ऑल दोज you need to prepare consolidated financial statements at the year end, right? So when your subsidiary is in different currency
and you are in rupees, you will have to take these rates. Remember, entire financial statements you are converting, you're translating your entire financial statements. Okay, there is a question also in study material, do that. Okay, now at what rate you will have to check, see, you will have to convert is for assets and liabilities is closing rate. Okay, and for income and expenses it is average rate, average. And then for any exchange difference, no, that is recognized in your OCI. यहाँ पे कुछ बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रहा, कुछ बिजनेस नहीं हो रहा यहाँ पे. Just because they are my subsidiary, we are converting, we are preparing consolidated financial statements and we are recording that in our books of accounts. We are preparing financial statements. राइट, यहाँ पे बाइंग सेलिंग नहीं हो रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता. तो ये टेम्पररी है, परमानेंट वाला नहीं है ये. सो ऑल दोस टेम्पररीज विल गो एंड सिट इन योर OCI, रिमेंबर दैट. So till now upon monetary, non-monetary, there we have entered into a transaction. Earlier monetary items, non-monetary items अपन पढ़े थे ना, तो there we have actually purchased it, or we have sold, or we purchased a property, plant and equipment. तो when you purchase it, at what rate we will recognize करके पहले पढ़े थे. यहाँ पे ट्रांसलेट करें, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं यहाँ पे. तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल गो इन क्लोजिंग रेट, इनकम एंड एक्सपेंसेस विल गो एट एवरेज रेट. And जो exchange difference, definitely there will be an exchange difference when you are converting, because at some specific rate you are taking at the year end. So what difference will go and sit in your OCI. I hope it is clear. So dividend का concept आता है, like for dividend, no, dividend will be recorded in your books of accounts when you declare the dividend, right? But dividend is actually received at some other time. तो when the dividend is declared, उस दिन exchange rate different रहता है, and when you actually receive the dividend, उस दिन exchange rate different होता है. तो standard says whatever any exchange difference between will be recognized in P&L and also in consolidated financial statements. तो यहाँ पे actual amount receive हो रहा है, so that's the reason it is going and sitting in your P&L even in your consolidated financial statements. Clear? उसको avoid करना बोले तो डिविडेंड डिक्लेयर भी एंड पेमेंट भी एक ही दिन में हो जाना, तो देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ डिफरेंस. लेट्स गो. सो इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, प्लीज डू सब्सक्राइब. या, सो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, एवरीवन नोज दैट. सी, इफ आई एम सेलिंग गुड्स, देन इट इज परचेजेस फॉर अनदर एंटिटी, राइट? तो मैं रिसीवेबल्स बोल के आई विल प्रिपेयर, राइट, एंड देन द अदर एंटिटी विल प्रिपेयर पेएबल्स. ठीक है, व्हेन यू आर कंसोलिडेटिंग नो, ये रिसीवेबल्स और ये पेएबल्स चले जाता है. और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पे एक इन्वेंट्री रहता. ठीक है, यहाँ से रिड्यूस हो गया बिकॉज दिस पर्सन सोल्ड, बट यहाँ पे इसको इन्वेंट्री में वो अमाउंट आ जाता, मतलब वो गुड्स यहाँ पे लाई करता 120 समझो. ठीक है, दिस स्टैंडर्ड सेज दैट एनीवेज दिस इज गॉन, इट इज़ नॉट देयर इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट. यहाँ पे इन सब्सिडरी नो, द वन हु इज परचेजिंग, ठीक है, यहाँ पे यू आर हैविंग दोज बुक्स, सॉरी यू आर हैविंग दोज इन्वेंट्री. तो स्टैंडर्ड बोलता है कि वट एवर प्रॉफिट दैट यू हैव बुक्ड, रिमूव दैट प्रॉफिट. मतलब 20 रुपीज़ प्रॉफिट दिख रहा है ना, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 120 है, तो दैट 20 रुपीज़ प्रॉफिट निकाल दो, अनरियलाइज प्रॉफिट, एंड देन हटा के इन्वेंट्री 100 बता देना. दैट इज़ व्हेन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, सो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस विल बी एलिमिनेटेड, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स एलिमिनेट हो गया, and then exchange difference will be recognized in P&L. That is more important because at some point of time, no, you will have to pay, even though it is your subsidiary, even though the other one is your holding company. At some point of time, you will have to pay the amount. Entire from the group point of view, there is a risk for an exchange का risk है. ठीक है, so that's the reason, any difference will go and sit in your P&L account. Trade payables and trade receivables will be eliminated. Eliminate profit from the inventory. We have eliminated it. This is another important concept मैं बोल रहा हूँ, disposal and partial disposal. Okay, just listen to what I'm saying. Okay, first we will see the disposal part. So this is disposal part. Understand, earlier I'm having 70% का ownership, मतलब मेरे पास control है. ठीक है, and then I sold 40%. Oh shit. ठीक है, and then I've sold what 40% here. Okay, now I'm left with how much? 30%. मतलब it is less than 50. उसका मतलब क्या? I've lost the control. Clear no? When you have lost the control, I still have what 30% left, but I've lost the control. वहाँ पे status बचा था, पहले वो मेरा सब्सिडरी था, अभी वो मेरा सब्सिडरी नहीं है.
शायद वो एसोसिएट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा मेरे पास, बट इट इज़ नॉट माई सब्सिडरी, सो द स्टेटस इज चेंजिंग. So in that case you will treat it as disposal, and disposal में ना whatever foreign exchange ये whatever amount is there in your foreign currency transaction reserve, that will be transferred to P&L. ठीक है, I will just connect this with the net investment part. One second. देखो यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना वी आर सेइंग एवरीथिंग इज रिकॉग्नाइज्ड इन OCI, एंड व्हेन यू सेल दैट it will come to P&L on disposal. When I sell that investment, no, all that OCI part will actually come into P&L. So now we are doing that disposal part. ठीक है, पहले मेरा ओनरशिप था 70%. ठीक है, now how much I sold 40%. I've sold something, no, now I've lost the control. So in case of loss of control, no, it is a disposal. Proportionately 30% ट्रांसफ़र नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे स्टेटस चेंज हो रहा है. पहले सब्सिडरी था, अभी सब्सिडरी नहीं है. तो entire amount whatever is there in your FCTR will transfer to P&L account. Perfect. Earlier I used to have 30% ownership, now I sold 20%. मतलब significant influence था पहले. अभी 20% सेल करने के बाद मेरे पास 10% है. मतलब now I'm not holding that significant influence. Now I'm not an associate. Maybe to call an associate you should have more than 20%. So I'm no more an associate, right? So in that case, no, it is also treated as disposal. Disposal में entire amount will be transferred to P&L. About 10% में own कर रहा हूँ, I'll retain 10%. No, वैसा नहीं होता. I hope it is clear. We will see one example from ICI. See, if you see, parent P owns 100% of foreign subsidiary. Yes, now it sells 70%. मतलब he is having only 30%. He lost the control. Loses the control. He lost the control of S. The entire balance of foreign currency transaction reserve in respect of S is classified to P&L. Right? Clear. Now we will see partial disposal. What is this partial disposal? Like I was having 90% of the ownership and I was having 10% in NCI. Okay, now I sold 20%. मतलब मेरे पास कितना 70%. 90 था पहले and I sold 20. Now I am having 70. Now NCI will become what? NCI is 30% now. पहले 10% था, अब ये 20% भी ऐड हो गया तो 30% हो जाता. I am left with 70%. I will recognize proportionate amount. यहाँ पे proportionate amount आता है. Proportionate amount from foreign currency transaction reserve, you will remove 20% and transfer to NCI because that is now NCI का balance. Okay. Earlier I used to have 35%. यहाँ पे बात कर रहे हैं significant influence वाला, and he sold only 5%. Still he is having significant influence. यहाँ पे भी आप देखें तो ना he sold 20%, but he did not lose the control. Right? More than 50% मतलब you still have the control. ठीक है, तो ये दोनों केसेस में स्टेटस चेंज नहीं हो रहा. They are selling, but still they retain that control. यहाँ पे 5% सेल कर रहा, and then it is still is having significant influence. That is more important. So 5% जो है ना, that will be transferred to P&L. यहाँ पे देखें तो this is transferred to NCA. Suppose understand, see यहाँ पे ना 30%, 10% was NCI, I'm holding 90%. राइट, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपन NCI बोल के बताते हैं. राइट, यहाँ पे तुम खुद ही NCI हो, यू आर ओनली हैविंग 35%. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली P&L में आ जाता है. लाइक इट इज़ लाइक, या, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. So if this video was helpful, please do subscribe to the channel, like and share with your friends. Thank you so much.